SSB center, you will be monitoring by the officer, okay, of the army, whether your movement is correct or not, whether you are standing on both legs or not. Understood? Yes, sir. Your presence of mind is there or not. What is charming on your face? What is the confidence level? Everything will be checked. Understood? Yes, sir. तो ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ फायदेमंद होने वाली है. In विश्राम positions, gap between two legs should be 12 to 14 inch. Quickly, 12 to 14 inch करिए. Both hand to the rear. Both hand to the rear, like this. देख लिया आपने? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. Stomach in. पेट अंदर डालिए. Stomach in. Stomach in. Chest out. खड़े जाओ. ऐसे देखो. Stomach in. Chest out. आया समझ? Yes, sir. Look at your own height. अपने height पे देखिए. Don't look down. Don't look up. Don't look there. You will explain them loud and clear. Then your leadership qualities will be appreciated. Understood? Yes, sir. हाँ, आपकी जो leadership quality वहाँ देखी जाएगी. By the basic drill, what I am telling you, unity. आपके अंदर एक unity की भावना आती है. एकता, working together, follow the order together. Power of command, leadership, qualities, your body language, your confidence, everything produced by the basic drill. आया समझे? Yes, sir. पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है. सावधान, विश्राम, तेज चल, पीछे मोड़, दाएं मोड़, बाएं मोड़, सामने सलूट, lot of things are there. Understood? Yes, sir. अगर आपने वो चीजें सीख ली तो समझ लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. यही तो चीजें होती हैं जो वो करते हैं. यहाँ पर से पावर ऑफ कमांड देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ है. ये समझे? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Scott, सावधान. Scott, विश्राम. Scott, सावधान. देख लिया? Yes, sir. You can do it? Yes. टुगेदर. विश्राम, Scott, विश्राम. सावधान. Scott, सावधान. एक साथ एक आवाज आनी चाहिए. Not a big signs. Understood? Yes, sir. Now give order. Scott, विश्राम. Scott, सावधान. एक चीज ध्यान दो. Everybody will get opportunity for the power of command. No making 45-degree angle. Both hands should well close to the body. There should be no gap between body and hands. एक साथ होना चाहिए. All together. Okay? Parade. Wishram. एक दो. Parade. सावधान. एक दो. Parade. Wishram. एक दो. Hello everyone, my name is Mansi Alawat and I am from Yamunanagar, Haryana. I've come here to practice my SSB. I'm going for the FCAT entry. I would like to tell you all that the facility here are very experienced and very knowledgeable, and they will enhance your personality to some extent. Rest is up to your hard work, and the facilities here and the infrastructure of DDA is excellent, and you will get to improve yourself a lot better. Just follow the guidance and just give your best. All the best to everyone, and I have made a great improvement in myself too. Therefore, I would like to thank all my psychologists sir, Dhyani sir, GTO sir and my IO sir. They all have helped me a lot in my overall improvement, and I just hope for the best. Thank you. My name is Madhav Chauhan. I am from Aligarh, Uttar Pradesh. I have came here to prepare for my SSB interviews through FCAT, and my SSB is on 1 November at Dehradun 1EFSB. In the DDA, I observed that the faculties were very good and all the teachers' behavior was also very good. I found that the way of teaching was different from the other coachings, and the coaching were quite good, and all the obstacles and all the facilities were available here, and I think that it is the one of the best coaching. Thank you. Jai Hind. My name is Nikhil Chauhan and I am resident of Tejpur, Aligarh of Uttar Pradesh, and I am preparing for the SSB of the 10+2 Navy Tech entry. And my experience here was very good, and we meet the experts of all the parts like psychology, GTO and the interview part. And they teach us all the things for the SSB interviews, and they
focused to change our personality in the positive way. And I find the team here for good practice, and also the practical session done by the GTO were very useful for us, and it was very beneficial for me. Jai Hind. I am Sonu. I am from Haryana. I prepared for 10th plus 2 Navy Tech entry from Doon Defence Academy in Dehradun. It is the best coaching in Dehradun. All the faculties are good, like psychology sir, GTO sir and IO sir. Psychology sir cleared all the doubts about the psych test, and GTO sir gave him practical use of the ground, and IO sir also tell me about the how we increase our personality. If you take coaching as a guidance, then I prefer you join the Doon Defence Academy in Dehradun. Thank you. Fine? Yes, sir. Basically, today you are batch number 16 of SSB at Doon Defence Academy has completed. Okay? Yes, sir. How's your confidence? Have you gained everything here? Yes, sir. You have completed GTO part, including group tasks, individual tasks. Okay? Yes, sir. Your SSB interview part, psychology part. Okay? Yes, sir. Hope you gained everything. Do you think that you have got confidence? Yes, sir. Good. You got observations? Yes, sir. Okay. Now this is the time before proceeding for SSB interview. For forthcoming interview, जब भी आपके जो SSB शेड्यूल जैसे इंटरव्यू पार्ट है आपका, ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन मिली होगी आपको, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, हाउ इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस. नाउ यू हैव टू वर्क फॉर ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस. अंडरस्टूड? है समझ में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि SSB is only for selection, not for rejection. They want to see some potential, some competence. Candidate should be confident enough. He should have complete knowledge of current affairs. Okay? He should have good communication skills, body language, presence of mind. Understood? You should have all the qualities. सबको पता है ऑफिसर्स कितनी क्वालिटीज होती है ऑफिसर्स की? 15. There are 15 officer-like qualities are there. What is the importance of these qualities? अगर आपने उन क्वालिटीज पर अगर गौर किया है, अगर आप देखते हैं कि how many qualities on you. Understood? Yes, sir. एक लीडरशिप क्वालिटीज है, पंक्चुअलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट क्वालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल. अंडरस्टूड? Yes, sir. Good turnout. Everything is important so that you can lead the command. Understood? Yes, sir. आप उनको ऑर्डर दे सकें और वो फॉलो कर सकें. अंडरस्टूड? तो लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जो आपने यहाँ पर बताया उसके ऊपर आप काम करेंगे. अटेंड योर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. ओके, फिजिकल एक्टिविटीज़. जैसे आपने देखा कि आपको कुछ टास्क, इंडिविजुअल टास्क में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, आपने देखा कि आपका स्टेमिना ठीक नहीं है, तो यू शुड गो फॉर मॉर्निंग रनिंग. ठीक है, आपके पुशअप कीजिए, सिटअप कीजिए, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आपको जो है एक ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मिला सबको? एवरीबडी गॉट ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस. उसको आप पढ़िए, उसके जो डॉक्यूमेंट नियम हैं, उसके जो सर्टिफिकेशन हैं, जो चीज़ें उसके लिए आपको करनी है उसको पूरा कीजिए. अंडरस्टूड? दूसरी चीज़ है अपने आप को हेल्दी रखना फॉर द मीन टाइम. बहुत जरूरी है. आपको बताया गया होगा यू गेट द चेस्ट नंबर्स एंड यू विल बी मॉनिटरिंग बाय द डिफेंस पर्सन एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग योर बेसिक ड्रिल. ओके? अंडरस्टूड? यू आर स्टैंडिंग प्रॉपरली. अंडरस्टूड? कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्प. अंडरस्टूड? पहली चीज फ्रेंड सर्कल. अंडरस्टूड? जब जैसे वहां पहुंचेंगे तो जितने भी बच्चे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, सभी कॉर्नर से आपके कई दोस्त मिलेंगे, तो उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए. अंडरस्टूड? तो आप अपने एक टैलेंट को शेयर कर सकते हैं दूसरे से. इट विल वर्क फॉर योर ग्रुप टास्क जब आपका जीटीओ का होगा. ठीक है, यू कैन हेल्प ईच अदर. अंडरस्टूड? आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर योर फोर्थकमिंग एसएसबी. Okay? All the best and good luck. Thank you, sir. Okay. Jai Hind. Jai Hind. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.